that you So, encounter welcome Frank. and communication. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। संदीप फ्रॉम एन एस ऑटोजोन आपके सामने लाइव आए हैं। आज हमारा एक वोक्सवैगन जेटा में ऑडियो अपग्रेड है। फुल टीम इज़ ऑन वर्क। वी आर गोइंग टू चॉक आउट द एंटायर प्लान फॉर द डे और दिखाने वाले हैं आपको ऑडियो अपग्रेड होने वाली है यहाँ। लेट्स गो एंड वॉच। नो भाव तो पी ले ना इसको लाइन ખાલી ભાષણ કરવાનું બાકી બધા સમજી જશે એટલે તો દીપુભાઈને આગળ રાખી દઉં મેં રહેવાનું. So our complete Helix team is there. Currently a discussion is going on. Yeah, currently a discussion is going on regarding अपना जो भी आर्किटेक्चर टोपोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है. There are two things that you need to always have as a plan before you could plan any installation. Okay. In this case, it is a it's a DSP is Helix V8 and amplification खड़े रहेंगे तो दिखाई देगा थोड़ा built-in DSP and mono or sub amplification is M1. M1. Okay. And the speakers, drivers, P series C3-way active in the front stage. And what two-way in the S component S two-way passive four-wheeler. And what's up? Hit and W. सो करेंटली टोपोलॉजी डिस्कशन चल रही है. मैं दिखा लेता हूँ आपको, एक वॉक अराउंड कराता हूँ कार का जो आज इंस्टॉलेशन जिस कार में होने वाला है. यू कैन टेक अ वॉक. द कार हैज बीन ओपन कंप्लीटली. डैम्पिंग वर्क इज़ इन प्रोग्रेस. हमारा पीछे वुड भी ओपन हो रखा है. ऑल द सीट्स आर being removed. Damping is in progress. हमारे भैया आपका नाम बताना. हसमुख भाई वर्क इन प्रोग्रेस में है, काम कर रहे हैं. इंजीनियर फॉर द डे फिटर है. और यहाँ पे डैम्पिंग एज यू कैन सी गोल्ड HD प्रीमियम डॉक्टर एटिक्स प्रीमियम गोल्ड HD सीरीज. द बोट इज टोटली ओपनड अप. पूरा खोल दिया गया है. हाई एंड सेटअप होने वाला है. फ्रंट एक्टिव सेटअप होने वाला है. 3-वे कंपोनेंट एंड रेयर में 2-वे पैसिव सेटअप होने वाला है. 12th चैनल DSP इंस्टॉल होने वाला है. व्हाट नॉट. दिस इज़ द डे. Is there any control for the control? Director. We can use the director. conductor Accessory being added. Like nothing else. BT. No, we don't have it also. BT is one thing. इनबिल्ट है वो सेपरेट है. और V8 अभी ब्लूटूथ का इंपोर्ट करने के लिए बड़ा प्रॉब्लम है. नॉर्मली आपका वीडियो में आप इतना शांत नहीं रहते ना सर. आई एम लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट्स. M1X ये इंस्टॉल होने वाला है ना. नहीं M1 ही होगा. M1 होगा ना. M1 होगा ना. सो बेसिकली फ्रेंड्स, जैसा मैं दिखाऊँ आपको, इट्स अ
brand Helix which is gonna be installed today. P series दिख रहा होगा, S series दिख रहा होगा, DSP Ultra दिख रहा होगा, V8 DSP दिख रहा होगा, DSP Mini दिख रहा होगा, M6 DSP दिख रहा होगा, what not. Everything in one shelf as you can see. Complete Helix all around. Helix का complete pure installation होने वाला है आज. And you can see all other products available. Correct? So a pure German engineering आज install होने वाली है. एक German काम है. As we know, Volkswagen comes from German. The body, the config, everything is German today. मैं आपको फिर से एक walk around कराता हूँ कार के अंदर. Subwoofer which we are going to use is again Helix. एम्पलीफायर यूज़ करने वाले हैं M1 is to cater the subwoofer को cater करने के लिए हम M1 यूज़ करने वाले हैं. K10W हमारा subwoofer है आज इंस्टॉल करने के लिए. As you can see, stable at 2 ohms, a single channel mono amplifier, Helix M1. और जो most important, the gold, I rather call it a premium gold altogether. All you need to understand, Helix V8 DSP. Helix की ये DSP इंस्टॉल होने वाली है कार के अंदर. 12 channel DSP, 6 channel for 3-way active in the front stage. For the rear, it's 2-way passive and remaining 2 channels for the subwoofer. So DSP, amplifier, subwoofer, what not. Wiring is in progress currently. भैया हेड यूनिट क्या होने वाला है इस कार के अंदर? स्टीरियो क्या होने वाला है? सिस्टम क्या है? हेड यूनिट सो OEM प्लेयर के साथ ही DSP कॉन्फ़िगर होने वाली है. और एज यू कैन सी our fellow friends in Gujarat, It is active in the 3A and passive in the rear. So we have utilized all the 10 channels of processing and 8 channels of amplification from the processor. So this is a maximum utilization of this processor, and we are going to connect direct conductor. So this is the signal flow drawing, and can someone do the power drawing for this configuration? Power drawing पता है किसी को? How will you wire all these things? Okay, and what will be the fuse rating? What will be the gauge of wire that you use? All of that in this. Can someone do that? कोई कर सकता है क्या? पूछ रहा है. Yeah. हमको करना है? Maybe. करेगा ना? मेरा तो होम काम चल रहा है. No, I know that. He wants somebody to do. Yeah. we still are working with the architecture of the entire
कॉन्फ़िगरेशन, पूरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे होना है, क्या वायरिंग होना है, क्या वायरिंग का गेज यूज़ करना है, क्या कितने एम्प्स का फ्यूज़ यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ों का डिस्कशन चल रहा है अभी। और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे और भी हुंडा गाड़ी जिनका ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो रखा है। वन इज़ इन थार, अनदर इज़ इन हीलक्स एंड द 3-way सेटअप इन रैपिड ऑलरेडी हो रखा है। So to make it more interesting, एक 3-way setup का live demonstration is in progress with a 972 touchscreen. डिस्टॉर्शन आ रहा है मतलब You are going by the books, right? Say how much it can handle. इतना तक वो ले सकता है पेपर में। So the tuning is in progress still, DSP tuning, और देखते हैं क्या ऐसा होने वाला है। एंड ऑफ द डे क्या सोल्यूशन आने वाला है, कैसा सेटअप रहेगा। केबलिंग का काम चल रहा है, अंदर ही अंदर केबलिंग सारा निकाला जा रहा है। वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस बिकॉज एंड ऑफ द डे पूरी वायरिंग, द RCs हैज़ टू बी फ्रॉम द अदर साइड, द स्पीकर cables हैज़ टू बी फ्रॉम द वन साइड। Yes friends, this is for you, the day is for you. It's just that हमारा लाइव यूज़फुल हो मेरे फ्रेंड्स के लिए जो लोग ऑडियो फाइल पीपल हैं। यस सो टी ब्रेक इन बिटवीन, चाय का ब्रेक चल रहा है और चाय के ब्रेक के साथ साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द करंट ड्राइंग्स। Mainly 4-gauge wiring would be used for the subwoofers to cater, which is the D block, D class mono block amplifier. We'll also understand about the fuse box distribution of the distribution block. Okay, just to explain you, this is the main power source, which is the battery. Okay, and you run one 4-gauge power cable to the main fuse, and this should be, I think in the last class we taught you 16 to 6 to 80. 6 to 8. 60, either 80 Ampere. ampere. No, Put no. the fuse. What is the Distance. 12 inch. 12 8 to 18 inch. 12 to 18 inch. before 18 inch from the battery? Yeah. Main fuse. Main okay. fuse. From the main fuse, you run To the another distribution. 4-gauge, okay, to the distribution, and from the distribution, To You- separate amplifier. yeah, you calculate the gauge of this wire using that formula that I showed you. You have to is calculate equal to the V square total by R. power and the distance that you're running, and apply the approximate gauge of wire that you use. In this case, less. 8 gauge is this. Yeah. Distribution block માર્યા પછી પાછું But- કયો નાખવાનું એ વાયર જોવાનું અને કેટલા વોલ્ટ પે And- એમ્પ્લીફાય છે પ્રમાણે. And you don't have to run a separate ignition wire for this, because this processor has got signal sensing, and you have the remote output fed Another into the. For the safe side, we are already
taking the ignition supply. What happens? Connect or not connect, that's the different yeah, part. what happens But is- again, is somewhat in the future, something if to add. you're cranking, Yeah. you will have pop noise. Doom. Exactly. Okay. So with this, you can set a delay. Okay. That is gonna happen when we open when we start the ignition. Then only. When sudden surge of power into the amp or Correct. sudden abrupt disconnect of the amp, Correct. you'll have pop noise. Okay, so you mean to say when we start the car, let's say after a 5 minutes or 2 minutes or something like that, we turn off the car entirely and then we turn on the car. We have a boom from the noise. In some cases, it's connected to your key. In Okay. some cases, it's connected to your electronic system. In some CAN bus cars, it shuts down after 3 minutes. In some cars, as soon as you remove the key, so it depends. It happened with me in 700. That's the reason I asked. Yeah, it's आपको because ना of आपको this. कुछ Yeah, खरीदना I had to crank it because it was D4. I wasn't left with choice. D1, I wasn't out having. नहीं है. That's the reason. It happened. And sir, it so happened when I increased the volume from 23 to 24, the sub comes down. And after it, if I just down it to just one, decrease one volume, like from 24 to 23, it comes back again, the subwoofer. That happened with me. We'll discuss that. Yeah. So you will be spending 10 minutes to prepare these two drawings, but if this is made when the car is coming back for any troubleshooting after 6 months, 1 year, 2 years, you'll forget it, what has gone into that car. So you don't have to open up things. You can go back to this, keep a record of all these things for all your installations. It will make a lot of things very easy. Okay, and even your installers cannot go wrong. They can go back to this and check. वायरिंग डायग्राम नॉर्मली इफ यू गो टू कार्तिक स्टोर 6 साल के पहले का उसके पास जैसे अपन वो चलन भरे वो संभाल के रखते हैं कस्टमर का पेमेंट का 6 months or 8 months 6 years 8 years back also you can take it out free. मतलब हम ऐसा कर सकते हैं एक जेरोक्स कस्टमर का वो जो रहता है ना गाड़ी का वो लेटर से उसमें रख देने का ऐसा नहीं So meanwhile, friends, our discussion one is by one. all about That will become the record book. ओके the So topology. whenever there's a troubleshooting or problem, you don't have to open the car. You can go Okay. back to your drawing. ઓકે એનું સમજાવે બાકી આપણે કહેવાનું એનું કામ છે કે એમનું કામ એટલું જ છે કે મારી આ પદ્ધતિ છે તમને ફાવે okay તો લાગે તમે તો રાખો, ઠીક તો છે. તમે તમારે રીતે કરી શકો છો બાંધતા નથી પરાણે પંડાવતા નથી મગજમાં જેટલું બેસે એટલું કરો Friends, again after 15 minutes or half an hour, I'll go live with the further installation. For then, see you.